So we are going to start with uh, rotations and symmetries. So if you rotations and symmetry operations. So symmetry operations, rotations and symmetry operations. So symmetry you know, है ना? Symmetry किसको कहते हैं? So there is so if you have, for example, flower base, if you rotate it by 360 degree, you will not be able to differentiate it. ये rotate हुआ है कि नहीं? जैसे अगर ये दो किताबें आपने यहाँ पर मैं डेस्क पर रखूँगा दो किताबें of the same वही same. So अगर मैं of the same dimension, length, breadth, height, same color. So if मैं इसको ऊपर को नीचे रखूँगा बुक को दूसरे को, so you will not be able to differentiate once you come outside. It has been ऊपर को मैंने नीचे रखा. So will not be. So in a sense, if space is symmetric in the sense that if you have a certain operation in space, it will leave that quantity intact or invariant. ठीक है? That's known as symmetry in that sense. The value of the quantity will not change in any sense. So for example, हमारे पास space में है, for example, x, y, z, and there is x prime, y prime, and z prime. So in your earlier classes you have translational symmetry. ठीक है? If you have something, so Galilean invariance हो जाती है. So if you translate things in space, it will not change. The quantity will not fundamentally change. In the same way, there is something called rotational symmetry, which is associated normally with angular momentum in that sense. So you change a quantity. So intrinsic in symmetry, there are some notions. Notions, एक ये है something you might have heard of isometry. Isometry सुना है? Isometry. Space is isometric. सुना है? Yeah, isotropic. Sorry. Isotropic. You're right. Yeah, isometry भी आ सकता है, but isotropic is the proper word. Isotropic means so in whichever direction you look, इसकी same density होगी, same ये. So it will not be. You should not be able to differentiate 2 points in space. किसी भी direction में देखो, ठीक है? यहाँ से जाओ वैसा ही होमोजीनियस होगा, यहाँ से जो वैसा ही होमोजीनियस होगा, ऊपर से जाओ नीचे से जाओ, ठीक है? In whichever direction you will not be able to differentiate 2 samples of space. If आप 2 samples space लोगे, ठीक है? You will not be able to differentiate them in any manner, density, mass, जो भी है. Such that अगर कोई quantity translate होगी एक में, it will also translate the same in the other. ठीक है? That's the point. अब इसी चीज़ को हम नॉर्मली कहते हैं यूक्लिडियन स्पेस और यूक्लिडियन स्पेस. अब यूक्लिडियन स्पेस में फॉर एग्जांपल यूँ दो ग्रेविटी में है ना कि प्रेफरेंशियली थिंग्स विल अट्रैक्ट, तो इट विल गिव सम स्पेस को कोई वैल्यू देता है, ठीक है? So since in quantum mechanics we normally deal with quantum mechanics में हम क्या phenomena deal करते हैं? Either we deal with atomic, nuclear, है ना, spin, elementary particle physics. So gravity को हम normally, so in those things we normally जो है ना, the things operate in the space which is Euclidean space, which has an isotropic property. So since gravitation as such is neglected in that context. अब हमारे पास जो symmetry operation है, तो once you for example symmetry is a very general term, but once you go, जैसे आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हो आइसोस्पिन सिमेट्री है ना, सिमेट्री इन जनरल सेंस, लियो विद दैट थिंग. So in one way we go to special theory of relativity. वहाँ क्या है?
पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, सुना है लोरेंस सिमेट्री या पॉइंकेरे सिमेट्री? Or if you might have heard of Lorentz group, a transformation is invariant under some Lorentz group. A transformation is invariant under Poincare group. So you assume, you modulate our definition of symmetry vis-a-vis हम कौन सी transformation करेंगे, in which space? ठीक है, normally जो symmetric transformations हैं, they operate in Euclidean space, and Euclidean space is a property of being isotropic. ठीक है, and normally जो Newtonian mechanics Galilean invariance हम लेते हैं. And in case of rotations, we have rotational symmetry, the way we have in angular momentum. We have done it previously also, or we can write it in terms of algebra. But we can have symmetry once we go to electrodynamics. Quantities remain invariant, not under general symmetry considerations, but under Lorentz symmetry or under Poincare symmetry. ठीक है? और Poincare symmetry under Lorentz transformation. Or Poincare transformation, symmetry is restored. Symmetry is preserved. That's a proper word. Preservation of symmetry कहाँ पर? ठीक है? Even if you do some operation, after doing that operation, the quantity will remain invariant or it will not change. ठीक है? So what are the operations? So you have to, if particles move at higher velocities, they have to be Lorentz. Under Lorentz transformation, they will be invariant, not Galilean transformations. और Poincare या Lorentz group का higher group एक है Poincare group, ठीक है, इसका सब group आता है. So under that things will be. So once we go to relativistic velocities, things can be invariant only under Lorentz transformation. ठीक है, और lower velocities, Galilean transformations, things may be invariant. A quantity may not change, which corresponds to our innate notions of space, which are Euclidean. ठीक है, Euclidean means they are isotropic in space, density same होती है हर जगह पर, and homogeneity भी है, हाँ, isotropic and homogeneous. इसका मतलब है कि डेंसिटी इज यूनिफॉर्म थ्रूआउट. अब ये है कि since here in quantum mechanics we are interested in basically psi as a quantity, है ना? Psi is a wave function, है ना? So we have to see कि ये psi कैसे ट्रांसफॉर्म होता है under some transformation. ठीक है, psi goes to, for example, psi prime और जो भी under some transformation. You have to find out those transformations where this psi will remain invariant. ठीक है, you got my point. So normally हम psi नहीं लेते हैं, हम psi star लेते हैं, है ना? हम psi star नहीं कहते हैं, हम कहते हैं psi inner product, which is psi square, it will be transform. So हम इसी चीज को हम mapping psi goes to psi prime, or we have a mapping psi prime phi prime goes to psi of phi. So inner product of these two should remain invariant. We can have psi also. We can have psi. So if we have two this function psi of phi, psi prime phi prime goes to psi of phi. The inner product, इसी चीज को हम कहते हैं, this transformation is called as isometry. It's called as, we say that the inner product is preserved. Inner product is preserving हमारे पास in that sense. अब ये है कि since we are concerned with psi, we are saying that rotations remain preserved. If you have a quantity, normally जब आप classical mechanics में पढ़ते हो ना, आप have a quantity x, y, z, ठीक है, under some matrix यहाँ से आता है, it goes to x prime, y prime, z prime, ठीक है. So you relate x with x prime, y with y prime, z with, but it is mediated by some matrix operation. ठीक है, अब यहाँ ये matrix operation normally in quantum mechanics होता है, we talk of operators. We replace matrices with
so psi is changed under some operator, it becomes psi prime. So अब यही है कि we should not be able to differentiate x with from x prime after some rotational transformation, y from y prime after some rotational. तो हो गए simple coordinates. But here we are interested in psi and psi prime. The psi inner product should remain. We should not be able to. That's it. अब ये there is a theorem which is associated with it. Theorem है. So theorem is that, for example, psi goes to psi prime, psi of phi prime square goes to psi phi. इसका inner product is same. अब ये हमारे पास दूसरी मैपिंग है. We'll define not only अभी हमने psi prime and psi, we can define another mapping psi prime goes to psi double prime. So इसका मतलब है we have merely phase change of phi, है ना, इस तरह आप पढ़ते हैं ना, sinusoidal wave, cosine. So if it's a psi wave, complex wave, we represent psi as a complex wave. So we are going to change it into psi double prime. Psi double prime is a same wave but modulo multiplied by some phase factor. But psi and psi prime are related. Psi double prime are related. So phase change जो psi double prime है, we can write it as iota alpha psi prime psi. So ये हम define करेंगे. This is the phase. So this is psi double prime is related by psi prime, and this is the phase of it. Again, we can have psi can be psi a plus psi b, and psi double prime can be psi a double prime and psi b. So here again we have, this is the same wave function but with altered phase conditions. इनका जो superposition है, it will be superposition of those waves which have additional phase factors. A double prime का भी, B double prime का भी, ठीक है? And they can be mapped. This can be mapped here. So if this is a wave, इसका phase factor आएगा. So we can इसका superposition ये है. So in the superposed wave में भी we have superposition added to it. And अब हमारे पास जो there are some properties. If you remember psi a, so I'll just write those properties. So इसका psi a prime, so इसका multiplication plus, so we have inner product of these two waves, superposed waves का, so it should be equivalent to psi a plus psi b square. यही मैं कह रहा था ना, तो मतलब their inner product of these superposed waves, this can be mapped on this. This means inner product of this can be mapped on inner product of this psi a plus psi b prime. This is psi a plus. So इनमें सिर्फ फेज का फैक्टर है, अदरवाइज दे आर सेम. और अगर हम प्रॉपर्टी वाइज देखेंगे, इसका इनर प्रोडक्ट इसके साथ पहले, फिर इसका इनर प्रोडक्ट इसके साथ पहले शुड बी इक्वल विद दिस एंड दिस. सो यू कैन हैव psi a double prime, psi b double prime plus psi a double prime and psi b double prime. इसका कंजुगेट आएगा, द सेकंड टर्म. psi a and same but psi and sin b, इसका ये आएगा कंजुगेट, should be equivalent to psi a
साई ए साई बी कंजुगेट, है ना। जब इंटीग्रेट इफ यू साई 1 साई 2 मिलेगी ना एक, इफ इट्स साई 2 देन साई 2 टेक as conjugate. So this is the property, or a real part of this psi a double prime psi b double prime is equal to a real part of psi a psi b. In the same way, imaginary part of psi a double prime psi a double prime is equal to plus minus imaginary psi a psi b. So यहाँ तक तो ठीक है. Now there are two very important properties in quantum mechanics, if you remember. एक linearity property होती है, एक anti-linearity property होती है, ठीक है. So linearity property, because they define things, lot of things. So linearity property में क्या है? So if you define, पहले हम देखेंगे psi b psi a double prime psi b double prime is equal to it gets mapped into psi a psi b. Psi and psi b में फर्क सिर्फ ये है कि वो है phase factor here, ठीक है. The inner product of these two phase factors is equal to the inner product of psi a psi b. अब हमारे पास देखो, ये हमारे पास है. If you have a scalar which multiplied by psi double prime, the scalar should come out. Or psi a double prime psi b double prime should also be equal to psi a psi b, ये इसका complex compute है. और lambda psi double prime is equal to lambda star psi double prime. ठीक है. एक प्रॉपर्टी होगी लीनियरिटी प्रॉपर्टी. देखो, these are two defining properties. One is the linearity property. Linearity property क्या है? If you multiply a scalar with this state psi, the scalar will come out. The scalar will come out. Antilinear property होगी, the scalar will come out but with a complex conjugate. With a, if that state, a quantum state satisfies this the earlier properties, तो कहते हैं linearity condition. क्या कहते हैं? Linearity condition. And it's known as, so we define things this way, linear algebra. So it's that some quantum phenomena are being they obey this linearity property, and in some cases the anti-linearity property becomes helpful. ठीक है. So it's how you construct a given state, उसका inner product and फिर उसकी जो properties quantum state, ठीक है. So linearity or anti-linearity depends. Then you become more comfortable with a lot of things once we attempt quantum mechanics in different details. अब क्वेश्चन है कि जो हमारा ये सिमेट्री ऑपरेशन है, how does it pan out in whether its operation is linear or whether operation is anti-linear. ठीक है. जो हमने सिमेट्री ऑपरेशन डिफाइन किया है, ऐसे जो ये स्केलर है लीनियरिटी में कैसे ये बिहेव करेगा, और अगर एंटी लीनियरिटी में द कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन कम्स आउट, हाउ कैन वी डिफाइन द सिमेट्री ऑपरेशंस, वेदर दे विल रिमेन इंटैक्ट और whether they will not remain, the symmetry operations will not remain the same, because they are going to have profound implications which we are going to study in the next class, how these linearity or anti-linearity operations change the things. अब यह है कि we also talk of something called unitarity. Unitarity किसको कहते हैं? Psi dagger psi 1 है ना. ये two Hermitian operators a dagger is 1, u dagger is 1 और u is equal to u inverse है ना. अब ये जो यूनिटरी ऑपरेशन है, फॉर एग्जाम्पल अब हम वी आर स्टडीइंग रोटेशन ऑपरेशंस, इफ सिमेट्री
ऑपरेशन इज रोटेशन, हम कहेंगे जो एंटी लीनियरिटी केस इज एक्सक्लूडेड बिकॉज रोटेशन एज ए क्वांटिटी है ना, इट्स बीइंग, जब हम, इफ यू रिमेंबर रोटेशनल ऑपरेटर हमने उस वक्त दिखाया था ना, ई टू पावर आयोटा, सो इट वाज कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन, कंटिन्यूसली एक रोटेशन ऑपरेटर को डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ दैट एक्सपोनेंशियल, यू रिमेंबर लास्ट टाइम एज स्टार्ट में हमने डिफाइन किया था। सो इट्स ए कंटिन्यूअस, अब उसमें ये है कि एंड इट्स बीइंग कंटिन्यूअसली जनरेटेड फ्रॉम आइडेंटिटी ऑपरेशन विच कैन बी इनकंसिस्टेंट, क्योंकि जो एंटी लीनियर कंडीशन है ना, इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इसका, ठीक है। सो which is inconsistent with complex conjugation of the multiplier. So जो इसकी anti-linearity property है ना, it doesn't fit in with the way how we have defined as rotationally invariant operator, which is continuously changing, such that u dagger u is equal to 1. So details we'll see. So फिलहाल आप यहाँ तक याद रखो, ठीक है। So antilinearity as a condition doesn't fit in the how we define these things, inner product, or we define, so that's it. अब हमारे पास ये है कि we have to see the rotation operator angular momentum and conservation laws. तो if you remember हमने क्या किया था last time. So since we are continuing with the idea of Euclidean principle, the isotropic homogeneity of space, so हमने क्या कहा था, psi prime, जो अगर हमारे पास कोई स्टेट है under this rotational operator, it will go from psi and psi are related by this acting on this, ठीक है। So we are assuming that there is some rotational symmetries or there, for example, जो न्यूटन थ्योरम अपने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ी है ना, उसका क्या है, what's the statement of that? Every conservation law has some symmetry, है ना? There is symmetry associated with the conservation laws. जैसे linear momentum, linear symmetry, linear space में वो अगर होगा तो will have conservation of linear momentum. अगर rotational symmetry है तो will have conservation of angular momentum, ठीक है। अब यही है, since we are trying to understand symmetry in the quantum mechanical sense, so we have a state psi, you are going to relate it with state psi prime, and there is some unitary operator which is acting on it, and this UR has the form is basically exponential of minus iota by h n dot g of phi. हाँ, this was हम previously हमने UR को ऐसे डिफाइन किया था, इसी में हमने लिया था, मैंने डिफाइन इसका प्रोडक्ट ब्रैकेट, we took first few terms that basically this is Lie algebra we did, तो हमने इसको ऐसे डिफाइन किया था यूनिटरी ऑपरेटर को। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हर्मिशियन जनरेटर है HI, हर्मिशियन जनरेटर्स ऑफ रोटेशन J, तो J किसके बराबर होगा, इसका प्रोडक्ट ब्रैकेट इसके बराबर होगा, शाबाश। If it's Ji, its commutator will be 0. If it's Ji, Jj,
जो क्वांटम मैकेनिक्स में मैं अगेन रिपीटिंग. So if it's for example px y minus x py, it's equal to h because the commutator of non-commuting observables. If they are different observables, it will not be 0. So if it j I j j, तो क्या आएगा? It will be iota j k, iota h j k. अब iota h के बदले हम लिखेंगे epsilon naught I j. So this will give you आपका जो cyclicity है property. If it's ij, it will be k. If it's jk, it will be I. If it's kj, it will be minus I. ठीक है? So on and so forth. और epsilon I j k j I j j is iota h. And basically what are the, if you have the solutions of जो हमारे operators हैं, एक operator है j and the other operator is j square. इसके जो eigen values हमको क्या निकलते हैं when we solve Schrodinger equation, if you remember, they come out to be j into j plus. These are the eigen values. Once these angular momentum operators, जब उसका हम Schrodinger equation को हम solution of Schrodinger equation for j and j square, these are operators which are acting on those states for spherical symmetric solutions of Schrodinger equation. तो उसके eigen values ही हमारे पास आ रहे, ठीक है? If they come out to be this way, so इसके वैल्यूज हमारे पास आएंगे. हमने कहा क्या कर रहे हैं, j is less than or equivalent to m is less than or equivalent to g. कैसे? क्योंकि ये आते हैं ना यहाँ से भी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आएगा ऐसे 0 1 2 3, यहाँ से आएगा -1 -2 so on and so ये आएगा 1 and 1 2 आएगा. so normally ये ऐसे आएगा both sides. So it will come out to be 2j plus 1. यहाँ से j and वो भी आएगा -j हो गया 2j plus 1. So this is the angular momentum algebra. अब ये कह रहा है कि if we want to construct the rotation operator explicitly क्या हो गया शाबाश? One is implicitly, there is attached to note, there is not direct correspondence हम देखना चाहते हैं. तो u or can be represent as, जो इसकी जनरल फॉर्म होगी रोटेशन ऑपरेटर की, एक्सपोनेंशियल ऑफ ये वाला, ये है ना a j को हम समटाइम्स लेते हैं ऐसे, j है ना समटाइम्स j मींस l प्लस s. तो इसमें एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, स्पिन भी आएगा. अब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से है, किस वजह से? वी आर सस्पेंडिंग दिस कोचिंग, ठीक है? वी आर सेइंग दिस एज एन क्वांटम मैकेनिकल क्वांटिटी, एज एन ऑपरेटर. सो दिस कैन बी जनरली रिटन एज phi plus 2 pi k. So we have this factor, जो हमारा दूसरा फैक्टर है ना, एक्सपोनेंशियल ऑफ ट्वाइस माइनस पाई आयोटा, ये वाला. You would define it in some general sense. K dot J by H is a unimodular operator acting on eigenstate Jm of n dot J is simply multiple. Multiple किसका है? मल्टीपल ये है इसका जो वैल्यू आएगा ना जे एम का, इट विल कम आउट टू बी लाइक दिस -1 to the power 2 km.
सो इस km के वैल्यूज जो होंगे ना, दे विल बी फ्रॉम -1 +1 जो भी है ऑन बोथ साइड्स, यहाँ से भी वहाँ से भी, बोथ साइड्स यू कैन टेक इट. अब ये है कि व्हाट इज देयर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एंड व्हाट इज देयर फिजिकल इंटरप्रिटेशन. ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मींस यू ट्राई टू हैव ए स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल इंट्यूशन होता है. फिजिकल may not necessarily be. Physical means how you feel that parameter in lab or something, ठीक है, as a quantity. अब there can be rules जिनको हम super selection rules भी कहते हैं. How we can select those states. J is equal to L plus S. Basically वो ultimately इनका जो root है ना spectroscopy में आता है. How these electrons, for example, electron is a quantum particle. It's not electron, proton, जो meson. These are all quantum particles. इनकी stationary state एक होती है, एक radiative state होती है. Stationary state हो गया when they are in the stable ground state. ठीक है? When they are in the, ये जो psi है ना, ये ground state में 0 पे आएगी. Now then there are continuous state, first order, जिसको n1, 2, 3. So an operator acts on that state psi. It will move, जो आप lateral operators पढ़ते हैं, it will go to state side, it will move to ऊपर ऊपर चलेगा, यानी ऊपर से नीचे नीचे जाएगा. But in those stationary states जो है ना, radiation नहीं होती. Radiation comes only when the state goes from ऊपर से नीचे जाएगी, intermediate state में आती है, और नीचे से ऊपर जाएगी. ठीक है? So you can basically यहाँ पर radiation जो आएगी, it is basically J is equal to L plus continuous rotation. Infinitesimal rotations आएंगे, तो states J to J plus 1, ठीक है? You have to have those rules, इनको हम कहते हैं super selection rules, where the parameters may be x, y, z, we have or theta and phi. Angular momentum है ना, L as a quantity, है ना, that's it. And there can be 2 pi k rotations. उसका भी जिस तरह हमने यहाँ पर psi double prime कहा ना, state psi is related to state psi double prime by some phase. अब इसमें भी phase का factor भी आ सकता है, ठीक है? And you can have some thing. अब we can have now what we can say, a symmetry principle like now symmetry and the best thing debate discussion about or relation about symmetry and conservation law is explicitly in the Noether's theorem. आप Noether's theorem को 2-3 बार पढ़ो. How symmetry and conservation laws can be extracted from symmetry principles. Symmetry means homogeneity of space and time, ठीक है? तो होमोजेनिटी सिमेट्री आइडिया से अब कंजर्वेशन लॉ पे कैसे आ सकते हैं? और इफ देयर इज अ कंजर्वेशन लॉ, इनडायरेक्टली देयर इज सिमेट्री. सो देयर इज अ सिमेट्री एक साइड से है एंड दूसरे साइड से क्या है? सो इट्स अ ग्रेट थिंग. कंजर्वेशन लॉ मींस सिस्टम में टोटल एनर्जी अगर कंजर्व है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सिमेट्री वी कैन गेट. सो इफ देयर इज सिमेट्री, जो हमारे ऑपरेशंस हैं, टोटल एनर्जी या व्हाटएवर, that will remain conserved. ठीक है? अब वो तो क्लासिकल मैकेनिक्स में है. सो वी कैन हैव द आइडिया कैन बी extended to quantum mechanical states also. The idea can be expanded to rotational states also, rotational symmetry. But rotational symmetry in regard to spin states, psi. ठीक है? This is the thing. Such that अगर हमारे पास if we characterize a time independent Hamiltonian, and the Schrodinger picture evolves from time psi that I d by dt of psi of p, ये state है, it's h alpha psi of p. Where this h ना Hamiltonian depends upon the dynamical parameters.
डायनेमिकल पैरामीटर्स क्या हो गए? हाँ, मोस्ट डिपेंडेंट हाउस है ना, ये जो भी है। एंड यू कैन ऑल्सो हैव दिस अल्फा एज अ पैरामीटर एक्सप्लिसिटली allowed for the possibility that the system may not be the system may be acted upon by external forces. इसमें जो अल्फा का है ना ये सबस्क्रिप्ट, we can also assume that system may be acted upon by normally जो हमारी जो bifurcation है ना in the sense जो हमने कल भी कहा था, what is state, what is measurement and what is observable, we bifurcate things, but it's not necessarily required. क्योंकि सिस्टम टोटल है ना, यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। एक हो गया होल इज मोर देन सम ऑफ पार्ट्स, एक हो गया होल इज सम ऑफ पार्ट्स, नहीं, होल इज सम ऑफ पार्ट्स मीन यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, यू नीड नॉट नेसेसरली bifurcate the system into environment, into surroundings. So ये जो हैमिल्टोनियन हमारे पास है, it's a dynamical quantity, it's not a static quantity. अब ये डायनेमिकल क्वांटिटी है, ये ऑपरेटर है, इट्स एक्टिंग ऑन दैट स्टेट, क्वांटम स्टेट साई, इट्स आल्सो सम ऑफ डायनेमिकल क्वांटिटी। सो हम अपनी आसानी के लिए समटाइम्स वी बाइफरकेट द सिस्टम इनटू एनवायरनमेंट, सराउंडिंग, स्टेट एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, ये कहने के मेरे कहने का मतलब ये है। तो अगर हमारे पास यूक्लिडियन प्रिंसिपल है विच वर्क्स इन कंजक्शन, यूक्लिडियन जो हम जिसमें यूक्लिडियन स्पेस में which has homogeneity and this property, we have a principle of causality is related to it. Causality means every effect can be traced to a given cause. ठीक है, that's it. And dynamic and the external fields acting on it are rotated together. The two arrangements. So you can have state psi, it goes psi prime goes to psi double prime, but they are the symmetry operations vis-a-vis rotational symmetry. So how you can relate two symmetry operations via those operator transformations? ठीक है, keeping this Euclidean space as well as causality का principle लाते हुए, such that iota h, so you are psi t must be a solution of ये rotational symmetry के बाद ये operator you are acting on the state psi, इसका time evolution के साथ vis-a-vis time के साथ ये है। So you have an operator which is embedded, which is going to act on the state psi, but उसका टोटल टाइम डेरिवेटिव है। एक तो ऑपरेटर रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेटर, बट इट्स यू कैन कंस्ट्रक्ट इट दैट वे, सो इट्स मस्ट बी इक्वलेंट टू एच ऑफ अल्फा यू आर साई ऑफ टी। तो अब हमने यही इक्वेशन को लिखा, यहाँ पर यू आर भी लिखा, ठीक है, वी हैव नॉट डन एनीथिंग न्यू। अब इसमें है कि इफ द सिमेट्री ऑपरेशन इज टाइम इंडिपेंडेंट, 5 minutes, 5 minutes. So if rotational, so H alpha R can be written as this. And if symmetry is time dependent as an operation, so H alpha R, so you multiply both sides by U R dagger. यहाँ से भी करो U R dagger, तो U R dagger is equivalent to 1. So H R will be equivalent to एक अपना U R H R H alpha, so we have multiplied by U R dagger plus इसकी जो सेकेंड टर्म आएगी U R dagger H, तो you can write it by, so you can
from these three equations you can have. So if it frequently happens that external parameters, so external parameters can be invariant under rotation. If that is the case, then H alpha R so you can say mathematically, if we define a state, a dynamical state like this, then under symmetry operations, under rotation operations, under rotation symmetry, it will come, the state will come back. The state will come back. So this was the thing. So we can do the thing, these things. So rotational symmetry operator को change करते हुए vis-a-vis that dynamical system, we can get the state back. So that's the part of that rotational symmetry. And towards the end, we can say, अगर हमारे पास Hamiltonian है ना, Hamiltonian is basically what? Total energy of the system, kinetic plus potential issue. But you can have हमारे पास जो हमारा ये तो constant है ही है यहाँ पर हमने जब define किया. Since we also added something W or L dot S as a quantity. So if you assume this Hamiltonian is constant, which doesn't change, so हमको सिर्फ spin पे concentrate करना पड़ेगा. L dot S, इसके different components and how rotational symmetry as a quantity will allow the state before unitary transformation जो transfer rotational symmetry transfer पर act करेगा and after क्या act करेगा. Assuming that this is constant जो हमने कहा. So if this is not also constant, ये भी change करता रहेगा, हमारा problem थोड़ा सा different, थोड़ा सा more complicated हो जाएगा. We have also taken into consideration the dynamical features of the system also, plus the spin as a system. तो हम अपनी आसानी के लिए we sometimes spin को हम थोड़ा अलग करते हैं, ठीक है? So that we can concentrate on spin also, spin the operators operating on the spin. Then we can have the selections and the super selection rules. Then allow transition, forbidden transitions. These are different things we can do. ठीक है? Stop. चलो.